Assalamu alaikum dear students. This is class 12th, subject economics, higher secondary school khumriyal. Topic is theory of demand. Subtopic is demand function. Question है आज का, what is demand function or determinants of demand? What is demand function or determinants of demand? Demand function shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. It shows how demand for a commodity is related to own price of the commodity or income of the consumer or other determinants corresponding to two aspects of demand, that is individual demand and market demand. We have two types of demand functions also. Number one, individual demand function. Number two, market demand function. जिस तरह से ये जो डिमांड फंक्शन है, जिस तरह डिमांड के दो कॉन्सेप्ट्स हैं. नंबर वन है इंडिविजुअल डिमांड, नंबर टू मार्केट डिमांड. इसी तरह है इंडिविजुअल डिमांड करूँ और नंबर टू है मार्केट डिमांड करूँ. अब ये जो दो टाइप्स हैं फंक्शन के भी दो टाइप्स हैं. नंबर वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, नंबर टू मार्केट डिमांड फंक्शन. इसके भी दो फंक्शंस हैं. डिमांड फंक्शन के दो फंक्शंस हैं. नंबर वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, नंबर टू इज़ मार्केट डिमांड फंक्शन. जिस तरह से डिमांड कर्व के दो फंक्शंस हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. कल आपने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व. आज आप पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन. अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? It shows how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinants. It is expressed as under: dx is equal to f into px, comma pr, comma y, comma t, comma e. एक बार फिर dx इज इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स, कामा पी आर, कामा वाई, कामा टी, कामा ए. आप देखिए ये dx क्या है. हेयर dx इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी x, यानी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर x, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर x कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन इनटू price of x, that is own price of commodity. Price of x means own price of commodity. Price R is price of related goods. Price of related goods. Y means consumer's income. Y means consumer's income. T is consumer's taste or preference. T is consumer's taste or preference. E is consumer's expectations. E is consumer's expectations. Now what is dx is equal to demand for quantity of x. Demand for quantity of x commodity is equal to function into price of own commodity, own price of a commodity x, related price of other goods, income of consumer, taste and preference of consumer, and expectations of consumer. एक बार फिर देखिए
quantity demanded for X commodity is equal to function into own price of a commodity, comma, related price of other goods, comma, consumers' income, comma, consumers' taste and preference, comma, expectations of consumer. अब फर्स्ट क्या है इसका? Own price of commodity, other things being equal, with a rise in own price of the commodity, its demand decreases, and with a fall in price, demand increases. ये इसकी पहली फंक्शन है ये कि अगर प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उसी हिसाब से डिमांड डिक्रीज़ होगी, अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। ये आपको पता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड भी। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस of a commodity, when price of a commodity increases, demand decreases. When price of commodity decreases, and demand increases. This is the law of demand. This inverse relationship between own price of a commodity and its demand is called a law of demand. Number 2, price of related goods. Demand for a commodity is also influenced by change in price of related goods. Price of related goods. Demand for a commodity is also influenced by change in price of related goods. इसके भी दो पार्ट्स हैं, substitute goods. Number 2, complementary goods. Number 1 is substitute goods, number 2 is complementary goods. आज का बस इतना ही है, कल इसके आगे देखेंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह।